अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ये कंटिन्यूशन है हमारे प्रीवियस वीडियो से लिंक करती हुई, और बहुत इंटरेस्टिंग इसके अंदर आप कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए देखेंगे, जिसमें हम डिजिट्स, जिसमें हम कुछ शेप्स, कुछ पैटर्न्स को देखेंगे। जी हाँ, टॉपिक का नाम है नंबर पैटर्न्स। और नंबर पैटर्न्स में आज आपको हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। Exercise 7B, New Syllabus D, Mathematics Book 1. Here is on your screen, Oxford, NSM, Book 1, Chapter number 7. Today in this video, we are going to discuss question number 7 and 8 in detail. So get ready. First, we have to discuss about the set targets. By the end of this video, learners will be able to determine the next few terms, find a formula for the general term of a number sequence or pattern, determine the next few terms. These are the targets we have set. Let's move towards the checklist. First step, क्या करना है आपने? Read the question carefully. Step number 2, generate a general formula. Number 3, solve the question accordingly, according to the instructions. Here is on your screen, exercise 7B, question number 7. There are different parts. Part A, the nth term. Let me show you by using my pointer. The nth term of a sequence is given by 2n square plus 1. ये दिया हुआ है आपको, right? Write down the first 4 terms of the sequence. First 4 मतलब from the beginning. Number A. Number B. The first 4 terms of another sequence are given 1, 7, 17, 31. Part 1. By comparing this sequence with the sequence in part A, write down in terms of n a formula for the nth term of the sequence. Part 2, hence find the 388th term of the sequence. These are 2 part and it has subparts 1 and 2. तो हम सबसे पहले देखते हैं पार्ट 1 में क्या कहते हैं। फर्स्ट टर्म, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं जनरल टर्म का 2n स्क्वायर प्लस 1, स्टूडेंट्स हियर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिकॉल द मीनिंग और द सिंबल n. n स्टैंड्स फॉर पोजीशन ऑफ अ टर्म। फर्स्ट पोजीशन की बात हो रही है तो नंबर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे n की जगह 1 रख दिया आपने। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. 1 2 टाइम्स 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3. सो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आई? 3. लेट्स टॉक अबाउट सेकंड टर्म. इन प्लेस ऑफ n यू हैव टू राइट 2. 2 स्क्वायर 4, 4 2 टाइम्स 8 प्लस 1 इज 9. सेकंड टर्म इज 9. सेम फॉर थर्ड टर्म. In place of n, you have to write 3. 3 square is 9. 9 to the 18. 18 plus 1 is 19. And so on. 2n square plus 1. अब n की जगह आप क्या रखेंगे? 4. 4 का स्क्वायर 16 to the 32. 32 plus 1 is 33. These 4 terms, initial 4 terms उन्होंने कही थी, तो वो हमारी क्या बनी? 3, 9, 19 and 33. अब बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्ट 2. उसमें कौन सी सीक्वेंस यूज हो, जो सीक्वेंस है उसमें कौन से जनरल टर्म फॉर्मूला यूज हो रहा है? लेट्स हैव अ लुक. ऑब्जर्व लुकिंग एट द सीक्वेंस गिवन in part 1 and compare the answer with sequence given in part 2. ये आपने सबसे पहले नोट करना है. नंबर 2, think of general formula. If we observe the sequence, the numbers are too less than the answers of part 2. Increasing order, we can think of 2n square minus 1. Try it out. Now here we are going to apply 2n square minus 1 and position of the term 1 आ गया. 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. 1 2 times 2. 2 minus 1 क्या होगा? 1. This is we have applied, right? So try it with another term to confirm. Sequence of part 1 क्या है आपका? 2n square minus 1 according to 3, 9, 19, 31. ये तो 33 we have already done. In sequence of part 2, 1, 7, 17 and 31 according to this general term formula as you have seen on my previous slide. Now they are talking about 388th term. तो इसका मतलब n की आपको पोजीशन दी हुई है जो वो 388 है, तो आपको परेशान नहीं होना, n की जगह रख दीजिए. स्क्वायर ऑफ
388 is 150544. When you multiply by 2 it becomes 301088 माइनस 1 कर दीजिए तो सिर्फ यहाँ पे 788 की जगह 87 बन गया. So simple. Exercise 7B now. If we see question number 8 is similar to question of 5 and 6. Question number 8 is here. ट्राइंगल दिए हुए फिगर 1 में 2 में 3 एंड 4. अब इसके कुछ क्वेश्चंस है इस टेबल में आपको फिल करना है. ड्रॉ द नेक्स्ट टू फिगर्स ऑफ दिस सीक्वेंस. पहले आपको यहाँ दो ट्राइंगल्स बनाने हैं इस पैटर्न को देखते हुए. राइट. पार्ट 2 कंप्लीट द टेबल. अब ये टेबल आपने कंप्लीट करना है. कुछ में यहाँ पे डॉट्स हैं और एन मतलब डॉट डॉट मीन्स कंटिन्यू. पार्ट 3 फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द 20th फिगर. या तो 4 दी हुई है तो 20th फिगर में कितने ट्राइंगल्स बनेंगे. In first figure, you can see there are 4 triangles. In second figure, if you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इस तरह से बन रहे हैं. तो find the value of n for which the figure has 121 small triangles. अब उस फिगर नंबर को मालूम करना है जिसके अंदर 121 ट्राइंगल्स बन रहे होंगे. So simple. Draw the next two figures of the sequence. Here you can see the example on your screen. कंप्लीट द टेबल. अब वो टेबल हमने कंप्लीट करने के लिए क्या करना है. दिस इज ऑलरेडी गिवन 4, 9, 16 एंड 25. वी हैव टू सी द पैटर्न हाउ नंबर्स आर कमिंग एंड हाउ कैन वी जनरेट इट. तो बहुत आसान है. लुक एट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. दे आर स्क्वायर नंबर्स. आपने देखा था ना 1 में 3, 2 में 9, इस तरह से पूरा स्क्वायर चल रहे थे नंबर्स. सो द जनरल फॉर्मूला वुड बी t इज इक्वल टू n+1 होल स्क्वायर. ठीक है. अब आप क्या करेंगे. आपने सिंपल इसमें अपनी वैल्यूज प्लेस करनी है और आप चेक करें कि क्या नेक्स्ट टर्म आ रही है. सिंपल. 5 + 1 स्क्वायर क्या होता है. 6 स्क्वायर इज 36. 6 + 1 7 स्क्वायर इज 49. देन सो ऑन. देन n+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू t. t is the number of small triangles. This is the way how you can find the missing number of triangles. ठीक है. ये फिगर नंबर है और ट्राइंगल्स इतने बनेंगे. पार्ट 3 एंड 4 n+1 होल स्क्वायर. तो 20th में कितना आएगा. 20 + 1 स्क्वायर. 21 का स्क्वायर होता है 441. तो इसका मतलब 20th फिगर में 441 ट्राइंगल्स बनेंगे. हियर यू कैन सी t इज इक्वल टू n+1 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे आपको 121 दिया हुआ है ट्राइंगल अगर तो कितनी कौन सी फिगर होगी. तो so simple. 121 is equals to n+1 whole square, and as you know that to cancel square we have to take the square root. Square root is 2 को cancel कर देता है like this. Square root, taking square root on both sides. So root 121 is equals to under root n+1 whole square. 121 square root होता है 11 का. ये square cancel हो गया square roots. So n+1, this +1 when you shift here it will become minus. 11 minus 1 is 10. The value of n is 10. Right. Learners, take care. This is time to say. Don't forget to like, share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. Thank you so much. I'll see you in my next video.